Good morning, dear students. Myself is Sumit. Today we'll be continuing the chapter 8, which is human health and disease. In today's lecture, we'll be talking about acquired immunity. This topic is very important for competitive as well as your examination purpose. In the last lecture, we talk about innate immunity, and as we know that the innate immunity is usually the non-specific type of immunity which is usually inborn. The response of innate immunity is very quick, and it is applicable for all types of pathogens. It is all in one type of immunity. Innate immunity consists of many types of barriers, which include the physical barriers like our skin, physiological barriers like the acid in the stomach, cellular barriers like some specific types of leukocytes, WBC cells, or neutrophil cells, or monocyte or natural killer cells. And finally, the last one is cytokine barriers, which include interferons. Now, come to today's topic, which is acquired immunity. As it is indicated by its name, this type of immunity is specific, and one can acquire this immunity by their own experiences. Acquired immunity is always pathogen specific. It means each and every specific pathogen have a specific type of immunity, have a specific type of immunity response. Let us suppose if we are talking about polio virus. So for polio virus, a specific polio vaccine was developed, and this polio vaccine can cure only the polio and not the other diseases, or not controlling the other pathogens. So it means acquired immunity is always specific in nature. It is also known as an adaptive immunity because one can adopt this immunity from their own experiences. Means, let us suppose someone facing a particular pathogen disease or pathogenic disease, he can form, or he or she can form the immunity against this particular disease or particular pathogen. So it is the adaptive immunity. It is always characterized by a memory, and when body encounters a pathogen for the first time, the body can produce a response which is known as primary response. Whenever the pathogen enters in our body, the first time the pathogen enters, the response of the body is known as the primary response. Primary response is always of low intensity. It is very slow response, but after that, the subsequent encounters with the same pathogen elicits a highly intensified secondary response, which is also known as anamnestic response. This is very specific, very powerful,
and very, very fast also. Our body always appears to have memory of the first encounter. It means for the first time, let us suppose we can understand it uh, uh, through an example. Like जब हम किसी टॉपिक को फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं तो पहली बार उस टॉपिक को पढ़ने में, उसको समझने में हमें कुछ टाइम लगता है, बहुत टाइम लग जाता है। सपोज किसी टॉपिक को जब हम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे थे, समझने की कोशिश कर रहे थे, तो उसे पढ़ने में, समझने में हमें 1 आवर का टाइम लगा। अब जब वही टॉपिक को हम सेकंड टाइम पढ़ेंगे, सपोज हमने उसको पढ़ा, आज हमें अच्छी तरीके से समझ में आ गया, फिर हमने उसको 1 महीने बाद फिर से पढ़ना शुरू किया, तो अब जब हम उसको 1 महीने के बाद दोबारा उसको समझते हैं, दोबारा उसको पढ़ते हैं, तो हमें उसमें 1 आवर का टाइम नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि हमारी ब्रेन में उसकी एक मेमोरी है। तो सेकंड टाइम जब हम उसको पढ़ेंगे तो वही हमें 10 से 15 मिनट के अंदर वो टॉपिक जो है वो पूरा हो जाएगा। थर्ड टाइम पढ़ेंगे तो वही टॉपिक को पूरा करने में हमें 10 मिनट लगेंगे। फोर्थ टाइम पढ़ेंगे, टॉपिक 5 मिनट में पूरा हो जाएगा। और अगर एग्जामिनेशन से पहली रात को पढ़ेंगे तो शायद उसमें 1 मिनट भी ना लगे। तो आप देखिए, पहली बार जब पढ़ा था तो रिस्पॉन्स स्लो था, हमें समझना पड़ा था उसकी पूरी मैकेनिज्म को। लेकिन जैसे जैसे हम इसको सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम और रिपीट करते हैं तो फिर हमें उतना टाइम नहीं लगता। सेम इसी तरीके से इम्यूनिटी का भी है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी का भी है। फर्स्ट टाइम जब कोई पैथोजन एंटर करता है तो बॉडी उसके रिस्पॉन्स को समझती है पहले, कि ये किस तरीके से बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है, कैसे ये बॉडी की कौन सी सेल्स को डैमेज कर रहा है, क्या इसकी, किस तरीके से ये बॉडी की सेल्स को डैमेज कर रहा है, इसकी डैमेजिंग मैकेनिज्म क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है। और इन सब चीज़ों को स्टडी करने के बाद हमारी बॉडी इसको मारने के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए स्पेसिफिक सेल्स या स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन करती है, जो कि उस पैथोजन का ही स्पेसिफिक होता है, उसी के हिसाब से काम करता है। और इस काम को करने में पहले बॉडी को इसकी मैकेनिज्म को समझना पड़ता है, उसके बाद बॉडी अपना रिस्पॉन्स दिखाती है, जिसे हम प्राइमरी रिस्पॉन्स कहते हैं, जो स्लो होता है। लेकिन जब वही पैथोजन सेकंड टाइम और थर्ड टाइम बॉडी में एंटर करता है, अब बॉडी को उसकी मैकेनिज्म को समझने की जरूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि बॉडी को पहले से ही मालूम है कि ये किस तरीके से एक्ट करता है, काम करता है हमारी बॉडी में। इसलिए बॉडी सीधे एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है और उसको किल करना शुरू करती है। इसलिए फिर ये रिस्पॉन्स जो है वो फास्ट हो जाता है। इसी को हम कहते हैं एनामिनेस्टिक रिस्पॉन्स। और ये एनामिनेस्टिक रिस्पॉन्स जो होता है ये मेमोरी पे बेस्ड होता है, फास्ट होता है। द प्राइमरी एंड सेकेंडरी immune responses are carried out with the help of two very specific lymphocytes. Lymphocytes are usually type of white blood corpuscles or white blood cells called WBC. These lymphocytes are known as the B lymphocytes and the T lymphocytes. These are also known as the B cells and T cells. The B cells are very, very specific because these B lymphocyte cells can form the very specific antibodies. The antibodies are the specified cells which can kill a specific antigens or the pathogens. While the T lymphocytes form helper T cells, these cells can help to form the B lymphocytes. अगर हम इसको एक फ्लो चार्ट में समझने की कोशिश करें तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, it is known as adaptive immunity. It is pathogen specific immunity. When the pathogen enters in our body, when pathogen enters in body, it shows some property.
जब भी पैथोजन बॉडी के अंदर एंटर करेगा, ये कुछ प्रॉपर्टी अपनी शो करेगा, और जब ये अपनी प्रॉपर्टी शो करेगा तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ही कुछ स्पेसिफिक एंटीबॉडीज डेवलप हो जाएंगी, और ये स्पेसिफिक एंटीबॉडीज डिलेड रिस्पॉन्स, देखिए पहला रिस्पॉन्स हमेशा डिले होगा। क्यों? क्योंकि मैकेनिज्म को समझेगा, उसके बाद एंटीबॉडी बनाएगा, उसके बाद एंटीबॉडी इनको किल करने की कोशिश करेगी। ठीक है, और क्या बनाएंगी? फॉर्म सम स्पेसिफाइड सेल्स नोन एज लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स जो हैं वो दो तरीके की हैं, एक है टी लिम्फोसाइट और एक है बी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट्स को अगर हम देखें तो इसमें हमने दो तरीके की लिम्फोसाइट्स लिखी हैं, वन इज नोन एज CD8 एंड सेकेंड वन इज CD4। The CD8 and CD4s are receptor cells. These are specific receptor cells which are present in uh, the membrane of lymphocytes, T lymphocytes. If the CD8 receptor is there, these T lymphocytes are known as killer T cells. These can directly kill the antigens. And the second one is that T lymphocyte having the CD4 receptor, these are known as helper T cells. Why they are called helper T cells? Because these can help to form the B lymphocyte. The main lymphocyte is B lymphocytes or B cells. And why these are very important lymphocytes? Because these B cell can form specified antibodies. And these antibodies have the power to kill the specific pathogen or specific antigens. If we are talking about the types of immunity, immunity is usually of two main types on the basis of the response. These are called cell mediated immunity and humoral immunity. Humoral immunity is very important. Cell mediated immunity, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कॉम्पिटिटिव लेवल पे। आप बस इस बात को ध्यान रखिएगा, whenever there is cell mediated immunity there is no antibody formation. मीन्स वो इम्यूनिटी जो विदाउट एंटीबॉडीज के काम करती है, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन नहीं होता है, उसे हम सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कहते हैं। But if we are talking about the humoral immunity is specific as it can form specified antibodies. So whenever there is antibody formation, it means it is a type of immunity which is known as humoral immunity. And whenever there is no antibody forms for the treatment of a particular disease, for the cure of a pathogen by our body, it is known as cell mediated immunity. So, in cell mediated immunity, cellular type factors are there and some specified cells are there. These cells are known as natural killer cells. देखिए नाम ही है इनका, natural killer cells. These can kill the pathogen. And these are sometimes also known, some examples of these cells are cyto means cell, toxic means poison, cytotoxic T cells. T cells, whenever I am saying T cells, these are specified T lymphocytes. The next one is humoral immunity. Humoral immunity or humoral immune response can form antibodies, and these antibodies are usually found in the blood. So, humoral immunity is dependent on some specified protein or chemical factors. These protein or chemical factors can form specified antibodies. So, these are antibody mediated immunity. These are also known as
antibody mediated immunity. So, cell mediated immunity, CMI, and antibody mediated immunity. So, yes, cell mediated immunity, this is CMI, and this one is AMI, antibody mediated immunity. So, these can form a specified antibody against some specified chemicals or protein formed by a particular pathogen, which can cause specified specific diseases. So this is the acquired immunity. So by now आप लोगों को ये पता है कि इन्नेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या डिफरेंस है. इन्नेट इम्यूनिटी बाय बर्थ होती है. एक्वायर्ड इम्यूनिटी जब कोई पैथोजन बॉडी में एंटर्स करता है, उसके वर्क से, उसके एक्सपीरियंस से उसको किल करने के लिए बॉडी खुद लर्न करके बनाती है. तो ये बाद में हम सीखते हैं. मेन इम्यूनिटी हमेशा एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है और ये पैथोजन स्पेसिफिक होती है. इसमें हर एक स्पेसिफिक एंटीजन के लिए, पैथोजन के लिए स्पेसिफाइड रिस्पॉन्स होता है. ऐसा इन्नेट इम्यूनिटी में नहीं होता है. सो थैंक यू सो मच. आज के लिए इतना ही.